हमने कहा भाई जितनी चाहे पैसे ले लो, हम सारी दौलत लुटाने को तैयार हैं। लेट मी टेल यू गाइस, इट इज नॉट अ स्मॉल SKD plant, it's a whole CKD plant. Yeah. Means the PCBA is unpopulated PCBA. उसके ऊपर किसी किस्म के चिप्स या ICs वगैरह पेस्टेड नहीं होते हैं. तो इट केम एज अ PCBA फॉर्म 2017-18 पाकिस्तान में ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि हम इतना आगे जा सकते हैं, बट दैट वॉज रियली समथिंग वेरी अमेजिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैमसंग रिजेक्ट्स यू, टारगेट किलिंग. I took a very hard decision and I joined a startup company. Those were can be called as a startup because startup concept was not very. हम आते हैं उस तरफ. We want to listen Yes. more detail on it. Yes. और हम हैं टेक ब्लेड. सब्सक्राइब टेक ब्लेड. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस इज सैयद अली यूसुफ फ्रॉम टेक ब्लेड. और हमने सोचा जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में हर डोमेन में लोग अपने सेलिब्रिटीज़ को आगे लेके आ रहे होते हैं, वेदर इट इज़ मीडिया इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रिलेटेड इंडस्ट्री या किसी कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्री, तो हमने सोचा इस दफ़ा टेक ब्लेड में हम ऐसे मेहमानों को आपके सामने लेके आएँ जो कि हमारी इंडस्ट्री में, टेक रिलेटेड इंडस्ट्री में हिडन वॉरियर्स के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा बहुत कम शादो नादिर आप लोगों के सामने आता है. तो हमने सोचा कि उनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी और अभी तक जिस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँचे, कैसे पहुँचे, और उनकी पर्सनलाइज लाइफ के बारे में कि वो खुद कैसे हैं और लोग उनके साथ काम करना कैसा फील करते हैं, और वो लोगों के बारे में और हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या राय रखते हैं, तो उनको आपके सामने लेके आया जाए. तो आज वी आर रोलिंग आउट आवर रेड कारपेट फॉर अ पर्सन. और उन्होंने अपनी जर्नी सैमसंग से शुरू करी, फिर उनका हाथ एक पाकिस्तानी लोकल ब्रांड में बहुत ज़्यादा शामिल है कि उन्होंने उसको पीक के ऊपर लेके गए, और वो था क्यू मोबाइल. उसके बाद फिर हाय, फिर पेशावर ज़ल्मी के CEO रहे, और आज हमारे साथ हैं CEO ऑफ DGC ग्रुप ऑफ कंपनी, डिजिस डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज, मिस्टर ज़ीशान कुरैशी. कैसे हैं ज़ीशान भैया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, आप कैसे हैं? आई एम वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. Thank you for inviting me. That is your and you're starting with this interview sessions. So I am really honored that you have invited and given me an opportunity to express my views. So thank you for that. हमारा बेसिक मकसद ये है कि जिस तरीके से हर इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनकी पॉडकास्ट होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में एक लड़का अगर मोबाइल जाके मार्केट में मोबाइल ख़रीद रहा है, कुछ परचेज़ कर रहा है, तो उसको नहीं पता कि बिहाइंड दैट मोबाइल फ़ोन ये क्या लंबी जर्नी है. मतलब एक फ़ीचर फ़ोन ख़रीद रहा है या एक स्मार्टफोन ख़रीद रहा है, और उस ब्रांड से रिलेटेड वो चीज़ कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन कौन लोग, कौन कौन से रोल, कौन कौन सी शख्सियात उसके पीछे हैं, क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है, पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, ताकि उस कंज्यूमर तक उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पहुँचे कि एक जो ब्रांड वैल्यू बनती है उसके पीछे कितने अवामिल होते हैं. तो हमने ये सोचा कि टेक ब्लेड में हम उन लोगों को सामने लेके आएँ जो कि एक हिडन वॉरियर्स हैं, या आप ये कहें कि एक गुमनाम सिपाही हैं, कि जो फ्रंट पे नहीं आते हैं. बहुत ही शादो नादिर कोई सेरेमनी भी होती है तो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग ही आते हैं. नॉर्मल कंज्यूमर तक ये मैसेज नहीं जा रहा होता कि किस ब्रांड के पीछे कौन सी शख्सियत है, किस ब्रांड के पीछे कौन लोग शामिल हैं, क्या टीम है और क्या एफर्ट वो पुट ऑन कर रहे हैं कि वो ब्रांड जो है वो कंज्यूमर के हाथ तक पहुंच रहा है. तो ये आइडिया, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा हमारा टेक ब्लेड का? Very brilliantly. I think it is going to make us make people understand also कि what a product life cycle is और क्या क्या स्टेजेस होती हैं किसी भी ब्रांड को या प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करने में, और उसमें आपको कितने चैलेंजेस का सामना होता है, और जब एंड प्रोडक्ट आता है और कोई भी कंज्यूमर उसको ख़रीदता है तो उसके पीछे कितने मराहिल हैं, और वो सारे चैलेंजेस और वो टीम मैनेजमेंट कठिन होती है, मगर इट्स एन एक्साइटिंग प्रोसेस ऑल्सो. और आई थिंक हमें बताने का मौका मिलेगा कि ये इंडस्ट्री पिछले 20 सालों में जब से मैं इससे एसोसिएटेड हूँ किस तरह इवॉल्व हुई और कितनी इमेंस अपॉर्चुनिटी है. और यंगस्टर्स जो इस वीडियो को देखें, मैं चाहूँगा कि वो इससे कुछ नया हासिल कर सकें, उनको पता चले कि टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर इंडस्ट्री में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर वो इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स बट एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स ऑल्सो, ताकि ये इंडस्ट्री ग्रो कर सके. ग्रेट. तो इसी एपिसोड को आगे लेके चलते हैं और ज़ीशान कुरैशी के साथ हम 1-on-1 क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो जिस तरीके से, और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि दिस इज़ वन थिंग व्हाट वी रिक्वेस्टेड टू मिस्टर ज़ीशान कुरैशी
कि हम आपको इंटरव्यू के सवालात नहीं बताएंगे। ज़्यादातर हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, कंटेंट दे दिया जाता है, तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ सवालात के ऊपर काम किया जाता है। बिकॉज वी वांट टू लिसन कि हु इज़ ज़ीशान कुरैशी, कहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और अब आप बताएं कि हु इज़ ज़ीशान कुरैशी और कहाँ से ज़ीशान कुरैशी इवॉल्व होके फ्रॉम योर टीन एज टिल नाउ। जी, actually by education I'm an engineer. I started my career as an engineer, Okay. communication systems from NUST. NUST, And okay. I was a technical guy. Okay. और MBA मैंने बहुत बाद में किया जब I was in Samsung, and I was working as an intern with NCR Teradata, and जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू सर्व फॉर सम टाइम, और वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मे बी आई एम नॉट दैट गुड एट टेक्निकल साइड वेयर आई लव्ड meeting people, discussing ideas and strategies, and overall encapsulation of an idea and then making it to execution. Maybe coding और ये बहुत सारी चीज़ें जो थी मुझे बहुत excite नहीं करती थी. Okay. And I met a gentleman, actually I was a business analyst, तो हम लाहौर आए थे, and I met a gentleman with the name of Mr. Sang Sukro. He was a Korean, and he was part of that presentation, and he met me and he said ke after the presentation he came to me and he said ke I have a job for you. Okay. And I said okay, lovely. I say I'm from Samsung, and it's around 20 years back, 2002 की बात है, 2003. 2002. हाँ Okay. जी. तो Samsung was an emerging brand at that Okay. time. It was kind of a very it was not a Fortune 500 company. It was evolving. उस वक्त Sony, Nokia, ये अमेरिकन ब्रांड्स और यूरोपियन ब्रांड्स बहुत आगे थे। मोबाइल फोन में तो बिल्कुल भी नहीं था, चाइनीज ब्रांड्स का तसव्वुर नहीं था। इवन कोरियन, साउथ कोरियन ब्रांड्स भी स्ट्रगल कर रहे थे जिस तरह सैमसंग है। He said he is setting up a Samsung office in Pakistan, so I have an opportunity in mobile phone. I said, wow. And I said, okay, what is the position? He said, in sales. And I laughed it out. I said, you know, who am I? I'm an engineer. He said, I know, but you have very good competency for sales. Anyways, I just shrug it out. I said, he's an old man, and time passed. Actually, and then for some odd reason, I thought okay, it is not making me very happy where I was working at that time. It was basically a contractual kind of a thing, and I had to just wanted to get it done to get my degree. And I met the gentleman again in Lahore. In Lahore. In And the he same said- year, 2002. In 2002, yes. It's like 4 months after, 3 months. Okay. He said, oh, where are you and what's going on? I said, yes, I am very much in Lahore. So he said, why don't you come to Karachi? I said, Karachi? In Karachi, you know, you are from Yeah, Karachi. I'm from Karachi. So in those days, Karachi was considered very hostile city, specifically for people coming from Punjab. Or when I told my parents, they said, oh, Karachi, no. हालात खराब है. Halat kharab hai, it's not gonna be possible. Target killing. This and that. Anyways, so I was of the opinion that okay, I'll go and I'll see, and if it suits me, then we'll do something about it. Okay. I told my parents that I'm just going to explore, and I went. और वहाँ पे हमारे जो immediate एक साहब थे अली अमानुल्लाह, who was heading mobile phone division at that time with Mr. O. So he greeted me, or I went for the interview, formal interview. So guess how long the interview was? Make a guess. 20 minutes. 20 seconds. Don't tell me. 20 seconds. 20 seconds. 20 second का interview हुआ. I just sat down. He said, the guy who was the head, he was a Korean guy. He said, what's your name? I said, this. How old are you? I said, I'm 23 years old. He said, okay, thank you. And I came out. I thought that, oh, maybe he has discussed and this and that. So it all is sorted. And I was just here to make it. You know, you are young. Yes. you're Much more naive. passionate, Yes, yeah. very passionate, and you are very idealistic also. So the gentleman I had to meet, he was not in the office. It was a lunch time, and I went out. Okay. In the afternoon, I woke up. There was a missed call. I called back, and he said, Zishan, there's a bad news. I said, what is it? You have been rejected. And I was kind of shocked. I took it very personally. I said, you told me this and that, and you said come, and I told everybody and this and that. Actually, I was, till that time, I was not sure that I have to join here. But this really hurt me. So I said, what's the reason? He said, you're too young. And actually that was, I was fresh graduate, and so I said, that's, you know already, I am, and I just graduated. So he said, yes, but it's a sales position, and it's very responsible, and you have to deal with distributors, and they're very, you know,
professional. At that time, they were dealing with Chimera, Mobile Zone, United Mobile, and they were the giants of Giants at that yes, time. At that time, and they were very professional people. And I was a kid at that time. So I said, no, this is, and then I emotionally blackmailed him that you don't have any power. It means you just all the way you invited me from Lahore to Karachi. He said, okay, give me one day. And we'll talk tomorrow. Don't make any decision and don't go back. Okay. Anyways, I was not going back. I was here for a week because I wanted to explore Karachi. So next day he called. He said that, okay, I have spoken to the boss, and he said, he's your team, and if you want to hire the guy, go ahead. So it's kind of a, you know, South Korean culture is a very, it's not very democratic. It's it's very dictator oriented. In somehow it is also good because the company was growing. So there's a very strict hierarchy and order making. So he gave him the authority to make the decision, but at the same time he did not like it. So the first 3 months was hell for me when I joined. So first of all, Samsung rejects you. It was kind of, yeah, they rejected, and then I accepted, and then I became the best of the best friends with Mr. Rowe. After 3 months, I proved myself that the decision was not wrong and I was worthy of it. And then he go all the way out in order to you know, give me an opportunity, which was almost $500,000 education opportunity, a master's in leadership and management. He sent me there, where I was not even able to qualify because you had to work for 3 years. You had to have a certain age and certain bracket. And I think that was a breakthrough, and I owe a lot to Samsung for that, and to Mr. Rowe that he put his faith in me, and the rest is history. And it was a roller coaster ride, a very interesting one, because Samsung was growing at that time. It was becoming a very passionate company. They were in a quest of becoming a love brand. And when it is happening, you get a lot of opportunity. Young people like me get a lot of opportunity. So I was passionate, I was workaholic, I was very ambitious. So I think I was in the right position at the right time. So the kind of escalation I had in my career, I had double promotions in consecutive 3 years. So I started with S1, and when I left, I was S7. So that is the highest you can achieve. Being a local, because there's a Korean and local hierarchy also. So, but in 2010 I was intended to go out of country. I was heading Pakistan and Afghanistan, and then I wanted that I should get a regional role, which I had for some time in Turkey when they were rolling out for, and I thought that it will give me more exposure, but it could not happen. And that made me somehow realize that now I am not able to, you know, grow more. So I took a very hard decision and I joined a startup company. Those were, can be called as a startup because startup concept was not very common. We want to listen more detail on it. Yes, so, but then Q Mobile journey started. So this is how it became, and in the next 2 years we made it number 1. And the rest is history. And after 4 years again I left that and I joined Hire. Hire was a total different paradigm shift. A home appliances company trying to set up a information technology and mobility business. It was very challenging, very tough, but it had an immense exposure. And then Peshawar Zalmi came, and we are all very passionate about cricket, you know that. So Peshawar Zalmi, actually I was a founding CEO, all the branding encapsulation, because I love making something from scratch up. You know, it gives you a lot of adrenaline rush. You have a lot of control. You have a lot of understanding of things. So then you can implement from. You can build the team. You can build the processes, and then you can change the market. And you can give something back to the community also. So this is what really excites me. Really excites me. So yeah, and then after some time, 2.5 years, we set up the first local assembly for laptops in Pakistan. That is a real pride I take. Because we always wanted that some localization has to be I've been there in your Hire factory. Yes. And let me tell you guys, it is not a small SKD plant, it's a whole CKD plant. Means the PCBA is unpopulated PCBA. उसके ऊपर किसी किस्म के chips या ICs वगैरह pasted नहीं होते हैं. So it came as a PCBA form. Then they do have those sort of Toshiba instruments who do the मोल्डिंग ओवर द PCBAs, जो कि बाकायदा CKD की मेन रिक्वायरमेंट होती है. और जब मैं विजिट कर रहा था वो हायर का प्लांट, स्पेशली फॉर दैट लैपटॉप डिवीजन,
आई वॉज अमेज एंड आई वॉज शॉक्ड कि बैक इन 2017-18 पाकिस्तान में ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि हम इतना आगे जा सकते हैं, बट दैट वाज रियली समथिंग वेरी अमेजिंग. But unfortunately, Pakistan information technology and mobility business landscape has always been very volatile and challenging. Every government is having their own policy. I think the consistency in policy has been the big problem we are facing, not only from the cellular end, which is the operators, but at the carrier side and the operators and the device manufacturers. The opportunity is immense. We have 230 million population, 65% are less than 35 years of age. Yes. We have 4G population is approximately 78%. But still, I think we are not able to capitalize on this in terms of what it requires. I think it requires, consistency and better understanding of the industry. And it really, I think, hurts us. Now you see that right now in which kind of situation we are, that the basic level devices are not available. So this is something I think we hope that things will get back better, because the other nations like India, Bangladesh, they are moving, on a forward basis, and we are coming unfortunately on backward basis. This is very disheartening, to be very I think one of the main reason is the inconsistency of the policy of the last 10 years or a decade. No, actually, they made a policy of mobile device manufacturing policy, which we call MDMP, and all those bigger players like Transsion, Samsung, they have put up their plants, SKD plants. Okay, that's the first step, and it was in place, and now 79%, and at some point of time 85% of the mobile devices which were sold in Pakistan were assembled in Pakistan in 2020-21. But right after that, now the problem is that the consistency of that policy is not been imposed. That how the deletion will start, how we will create an ecosystem for the localization, where the packaging, chargers, batteries and other components should be made here, so that we can create smaller industries in order to complement that big industry. This is how an industry grows, and this is how you start localization. Still we are importing all the components. That is the first step, but unfortunately I think the overall economic landscape of the country is so volatile right now that everything is very shaky. Some operators are on the buyout and they are trying to leave out of the country just because they are not able to take the pressure of this volatility what is happening in the market right now. But we hope that things will get better, because still opportunity is huge. We have huge population and we have immensely talented youth which can make a lot of difference. So let's hope things get better. Inshallah. One thing we must mention here कि by the numbers अगर हम जाएं तो 2021 में हम अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि 21 मिलियन डिवाइसेस पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई इन अ फॉर्म ऑफ एसकेडी. तकरीबन पाकिस्तान के हिसाब से 2 करोड़ से ज़्यादा डिवाइसेस बनती हैं जो पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हुई हैं. इसमें फीचर फ़ोन और स्मार्टफोन दोनों शामिल हैं. It's big, हाँ, it's a big number. और I think अब आप देखिए अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में तो वहाँ पे अब एप्पल जैसा ब्रांड प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है. बिल्कुल. So I think it's not only about the consumption of the local population, जो कि ह्यूज है, मगर जो फ़ायदा है उसमें यह है कि आप बना के बाकी मुल्कों को बेचें, जो सेंट्रल एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, कर सकते हैं. और लोकल ब्रांड्स जिस तरह अब DGC में डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज में वी हैव टेकन अप दिस इनिशिएटिव ऑफ एक्स मोबाइल, एंड एक्स मोबाइल क्वालिटी इज़ ग्रेट. It's been well received. In last 3 months we have achieved mashallah 22% market share. Great. which is a huge achievement. Credit goes to all the team and the management and everybody worked very hard. But I have never seen in my whole life that a brand coming from starting from 3-4 months ago and taking up 22% of the market share is huge. Now we are in the process of launching our own smartphone brand with the name of Sparks, which is going to be pocket friendly, very cost effective, full feature phones for the people who cannot afford. The devices prices has been increased by 50 to 55% in last 1 year because of the dollar depreciation and certain duty increment. Custom duties and sales tax and PTA tax, although that is not a PTA tax, that's FPR.
I don't know why people call it PTA tax, but because the collection is by FBR. So it is becoming very difficult to get a reasonable device in a reasonable price. So I believe that Sparks will create that kind of segment over where people will be able to afford a good device with reasonable quality features, a pocket-friendly phone which will be able to enhance their lifestyle. So this is what our objective is and motto is, and we are trying to do that. So inshallah, let's hope that we'll be able to make it happen within this year. इंशाल्लाह. So Mr. Ishan, we have some questions for you. ठीक है, और हमारा ये सेगमेंट है कि हम हर जो हमारी टेक सेलिब्रिटी होगी उससे कुछ सवालात करेंगे, so that you can tell the youth of this country या जहाँ जहाँ भी हमें यंगस्टर सुन रहे हों तो उन्हें पता चल सके कि इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए what are the basic ingredients, वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, या अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जाके कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपको आज मौका दिया जाए कि अगर वो काम आप ना करते या वो डिसीजन आप नहीं लेते तो कोई उससे लर्न करना चाहे, तो उसकी मुताबिकत के हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं. सो वी आर गोइंग टू आस्क दोज क्वेश्चन फ्रॉम यू. तो मुझे आप ये बताएं कि आपको कभी ये ख्याल आया कि यार सब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, मैं भी बाहर चलूँ, व्हाई नॉट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पिछले जब से मैंने करियर अपना स्टार्ट किया है, एजुकेशन के लिए मैं बाहर जाना चाहता था और अल्लाह मुझे मौका भी दिया, सो आई केम बैक. बट आई थिंक दिस इज़ द ओनली ईयर आई थॉट दैट आई should think about relocation. This year. This is the, but that is also एक मौहूम सा एक जिसे कहते हैं ना ख्याल दिल में पलना शुरू होता है कि यार why not explore. But still I believe कि still there is a lot of hope here for the industry, for Pakistan, and I really think we need to जो हम छोड़ के जाएं पाकिस्तान वो ज़रा ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान हो जो हमें मिला था अपने बच्चों के लिए. सो अगर हम चले जाएंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो मैं कभी तो इन माई कैपेसिटी आई ऑलवेज थिंक यार हम क्या बेहतर कर सकते हैं. बट येस आई वुड से कि ये साल में मुझे वाकई में ख्याल आया कि वाई नॉट. सो दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ कि 2022 में ही ज़ीशान कुरैशी को ये ख्याल आया अपने 20 साल के करियर में कि यार आई थिंक सोचा जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं और पिछले आई थिंक 2019, 20, 21 तक हालांकि कोविड था, सब कुछ था, बट बहुत ग्रोथ आया टेलीकम्युनिकेशन में भी. ओवरऑल थिंग्स वर स्ट्राइविंग. बट उसके फ़ौरन बाद जब आप देखते हैं कि यार 5 स्टेप्स आगे जाने के बाद अब 10 स्टेप्स वापस आ गए हैं जस्ट बिकॉज सम सेल्फिशनेस ऑफ फ्यू पीपल इर्द गिर्द, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यू फील सैड अबाउट इट. तो मे बी इसकी वजूहात ये थी. सही जी. हाउ मच सेटिस्फाइड आर यू विद योर करंट रोल? मतलब जहां आप पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच चुके हैं, या यू स्टिल थिंक कि अभी वो वकार आना है ज़िंदगी में, अभी वो पोजीशन आना बाकी है? ये एक बड़ा ही सब्जेक्टिव सा सवाल है. आई थिंक कि एवोल्यूशन इज़ द नेम ऑफ द गेम. कुछ अरसा मैंने तबलीग में लगाया जब मैं स्कूल में था, और ऐसा प्रोसीजर है कि जिससे आपकी मेमोरी इरेज कर दी जाए, तो यू वांट टू ऑप्ट दैट ऑप्शन और नॉट? हाँ, आई वांट टू एम्बिशियस, पैशनेट, वर्कहॉलिक. यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल. अच्छा, मेरे पास है एक ओके वाकया. अच्छा. और आप ही के साथ का है. ओके आई थिंक वही वाकया है. लेकिन रात को 3 बजे तक हम 4-5 लोगों में से कोई भी सो नहीं पा रहा था और हम सब एक दूसरे को मशकूक निगाहों से देख रहे थे. सब्सक्राइब टेक ब्लेड.